In Gridview, in Datagridview, we see how we find or search in table or in database. First, here we working in MS Access database. In this way, we make up a table. This is my the table. This is the table one, table two, table three, table four. Okay, query one, query two, query three. So first we connect our database. Hmm, How we connect our database? Database would be connected. We go to this connect, next, next. Then we from here we choose our database. Either this database is this database in my project. We just copy through the documents. From documents we copy and paste in our project. So you can also do like this. Then you will just click it and open. Then it will, you choose like this and then open. Then it will, from here it will connected. You just text test connection, then okay, click it will. Here I am not doing because I have already connected our database in our project. So I'm doing cancel. I'm just showing you how you can do it. In this way, from data source you open it, just click on data grid view, just this is our query number table I have taken. Like this way you can copy and paste from here or just drag it. For this you will delete it, click right click, delete it. So this is the my I have make level one text box. This is search button, refresh button and close button. What I will do, I will change the color of this. Going in this way and customize it and use this color. Okay. Now suppose I want to change the color of the button, then also we can do it. We just go to the back color. This is not my back color. Okay. Now this database is connected. What we will do next? We will just go to this one, data set, and double click on it. This will open you. Here, query to. And let's see what we have done here. This one is query to binding source and query to table data. Okay. Here we will go to the view code. This one is done. Right. So next what we will do, we go to this one. Here in this data set, I will table 1, table 3 and table 2. So go to the design, this data set, click on this. I have connected this one. So let's see, query to binding source, right? So we go to the query to, put cursor on the query to table data, table adapter, right click, add query.
This kind of table is open. Choose a command type. We are using SQL statement. Next, we go to the next. Then we go to the query binder. Here is our integer ID should be there in PT code. So we just click on it, filter upside. Sorry. Then we write this question marks query execute query. Here is null integer or table should not be null. We put 1. Then click OK. Then OK. Then next. Here we can write anything to identify or in. Here we will first we do fill by we write ID. Okay. Small I. Sorry. We write it here ID. Then we click next, finish. Second we can do it. Again we right click it, add query, next, next query builder. Suppose we want to click here text type. So we write it here in filter box. What we write? We write like question mark, give small space, then plus space, click it like this one, then percentage, then write OK. Next, here we write then customer. I've given a small. Next, finish. Okay, then again we can do it. Query. Next query builder. Here is my this is my transformer. Actually, I have given the column name trans serial, but this is transformer serial. Write it again like question mark plus sign percentage. Okay. Then we go to next. Here we can write actually ठीक है next finish. Okay, this is my table is completed. Now I will close this. Okay, not first we have to save it. Save like this one. Now we go to the view code. In this code, go to view code. In view code, first we down this one. Then we write it import system data dot oltp import system data table. ठीक है. Now we go to this one, click this is already there. Then first, second, third, then fourth, fifth.
and first we will write me dot and in button. What we will do, we will just copy this one, copy and paste in refresh button. This is my refresh button. The same thing should be there. अब हमें सीरियल पोर्ट के लिए इसमें है, पेस्ट तीनों में कर देंगे. नाउ इसमें हम क्या करें, हमने वहाँ फिल किया है, फिल डाटा कैसे होना है, बाय फिल बाय आईडी, इसमें आईडी कर देंगे. अब कैसे करना है, थ्रू टेक्स्ट बॉक्स होगा तो उसमें कॉमा करके हम टेक्स्ट बॉक्स का देंगे पीटी. जो एक्चुअली ये क्या, ये क्यों करते हैं, क्योंकि पीटी जो हमारा जो ये वाला है सीरियल आईडी, इसका कॉलम का नेम हमने दिया पीटी कोड. अब इस सीरियल कॉलम आईडी में एक्चुअली क्या हमारा इंटीजर है, इसलिए इंटीजर को हमेशा हम अलग से डिफाइन करते हैं और उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स देते हैं. टेक्स्ट बॉक्स कौन सा हमारा वन है, डॉट टेक्स्ट. ठीक है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे. फिल बाय हमने किया है ट्रांस, है ना, तो हम इसको ट्रांस लेंगे, इसको कॉमा करके, इसमें जरूरत नहीं है हमें, ये डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि टेक्स्ट है ये. ये भी हमारा टेक्स्ट है इसलिए इसको फिल हम वही करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग होने की वजह से हम इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा इंटीजर हमारा टेक्स्ट बॉक्स का इसको डिफाइन करते हैं वो इंटीजर है. अब इसको हम सेव कर लेते हैं. ठीक है, राइट. अब हम जाते हैं, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. कनेक्ट हुआ है कि नहीं चेक कर रहे हैं. या तो इसमें हमारा आ गया, सीरियल नंबर दे सकते हैं, उसमें कस्टमर में नाम हम देते हैं वर्ड, हमारा नंबर रहेगा, एक हमारा ये हमने पहले से करके रखा हुआ है. एक्चुअली एक हमारा ट्रांसफार्मर का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है. ट्रांसफार्मर के लिए हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है, इसको हम चूज कर रहे हैं. इसमें हमने कहाँ गलती कर दी है, कहीं तो गलती की है, नहीं तो ये सेव में जाता है. तो ये हमने कहीं गलती की है, क्या गलती की, तो इसमें हम सेव करेंगे.
So, so we can this way add.